Namaskar, good evening viewers. You're watching House Highlights on Sansad TV. I'm your host Rajiv Kumar Singh. Wednesday was the fifth day of the monsoon session of the Parliament. Two bills were passed today, one in the Lok Sabha and another in the Rajya Sabha. Half a dozen bills were introduced in the lower house. In this program, we will look at the highlights of Wednesday's proceedings in the Parliament. Let us first take a look at the headlines. Lok Sabha passes Forest Conservation Amendment Bill 2023, 6 other bills, including one to amend the Jammu and Kashmir Reorganisation Act introduced in the Lok Sabha. Congress moves no confidence motion against the central government in Lok Sabha. Speaker Om Birla admits the motion to schedule time for discussion. Parliament passes Constitution Scheduled Tribes Order, Third Amendment Bill 2022 to give tribal status to Hathi community in Himachal Pradesh. Both houses pay tributes to war heroes on Kargil Vijay Divas. Let us begin with the proceedings in the Lok Sabha. 26th of July, as we all know, is celebrated as the Kargil Vijay Divas. Soon as the lower house met today, the Speaker Om Birla paid tribute to the martyrs of the Kargil War fought in 1999. माननीय सदस्यगण, आज संपूर्ण राष्ट्र भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा कारगिल युद्ध के दौरान प्रदर्शित अदम्य साहस और पराक्रम के सम्मान में कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर हम अपने सशस्त्र बलों की वीरता, संकल्प शक्ति और प्रतिबद्धता को नमन करते हैं, जिन्होंने कारगिल के प्रतिकूल मौसम और दुर्गम इलाके में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए विजय प्राप्त की है। ये सभा कारगिल युद्ध में शहीद हुए सशस्त्र बलों के सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें नमन करती है और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब ये सभा उन सभी वीर सैनिकों की याद में कुछ देर मौन रहेगी, जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ओम शांति। The Speaker today accepted the no-confidence motion moved by Congress member Gaurav Gogoi. The Lok Sabha Speaker admitted the no-confidence motion and said he will schedule the debate after discussing it with all parties and going by the prescribed rules. माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। The lower house today discussed and passed the Forest Conservation Amendment Bill 2023. Environment,
Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav moved the bill to further amend the Forest Conservation Act 1980 as reported by the Joint Committee. Several members took part in the debate and the bill was passed by a voice vote. सभापति महोदय, मैं वन संरक्षण संशोधन अध्यादेश 2023 जैसा कि वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पर संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया है पर विचार करने का प्रस्ताव लोकसभा में रखता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। The bill aligns perfectly with our nation's vision by facilitating the establishment of new forests and plantations and will significantly contribute to our commitment of creating a carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent by 2030. So at the hour of test, I would like to congratulate the government on continually managing commercial and environmental interests and taking a careful look at the current privileged situations. So I would like to highlight the positives as well as some suggestions on behalf of YSR Congress Party. Insertion of preamble, the proposition to insert a preamble to the act is an important one. मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव बिल है और जहाँ पहले सिर्फ संरक्षण की बात होती थी, आज जो है संवर्धन की बात भी हो रही है। सर, बिल जो है जेपीसी में भेजा गया था और आपकी नेतृत्व में 31 सदस्य वहाँ पे मौजूद रहे और बहुत अध्ययन के बाद सभी स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करने के बाद और विशेष करके जो बॉर्डर के स्टेट्स है, हिली स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है और डेवलपमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट बॉडीज़ के इनपुट लेने के बाद और उन सभी सुझावों को इसमें शामिल करने के बाद ये बिल प्रस्तुत किया गया है। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया में पर्यावरण के क्षेत्र में जो अपने देश के हिसाब से लक्ष्यों को तय करने के पूरा करने का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उस पर लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारे जो एनडीसी के 3 लक्ष्य हमने तय किए हैं, विशेष रूप से क्वांटिटेटिव और 5 क्वालिटेटिव लक्ष्य तय किए हैं। मुझे सदन को ये बताते हुए खुशी है कि 3 में से 2 लक्ष्यों को भारत ने समय से 9 साल पहले प्राप्त किया है। जो हमारा तीसरा लक्ष्य है वो देश के कार्बन सिंक को 2.5 से 3 बिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य है और उसके लिए इस बात की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री को, ट्री कवर को, वानिकी को बढ़ाया जाए ताकि पारिस्थितिक तंत्र को, पर्यावरणीय सुरक्षा को, बायोडायवर्सिटी को मजबूत कर सकें। When the House reassembled at 12 noon after an adjournment during the question hour, apart from laying some important papers, legislative business was also taken up. 6 bills were introduced in the Lok Sabha. The Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2023, the Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023, the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023, the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Castes Order Amendment Bill 2023, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2023, and the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2023 were all introduced in the lower house. On Wednesday, question numbers 81 to 100 were slated to be asked in the Lok Sabha. The ministries involved in Wednesday's question hour were textiles, commerce and industry, coal, consumer affairs, food and public distribution, electronics and information technology and planning. Member Maluk Naga asked the question on jute related to the textile ministry. 10 of the 20 questions slated were for the railways ministry. Before the House was adjourned due to constant sloganeering and obstruction, MOS Textiles Darshana Vikram Jardos and Railways Minister Ashwini Vaishnav answered a few questions. Let us listen in.
मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो एक्सपोर्ट होकर के पैसा देश में आया उसमें से कितना पैसा किसानों को दिया जा रहा है इंसेंटिव के रूप में, और दूसरा सरकार क्या कर रही है जो जूट की खेती नई टेक्निक से पूरे देश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो ज्यादा बढ़ाई जा सके। उन्होंने जो सवाल पूछा है कि आज तक का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जूट का पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो हम लोगों ने तय किया है तो उनका जूट के उत्पादन में 76 लाख बेल की तुलना में 2023 में 91 लाख बेल्स हो गया, और आज वर्तमान में 10,000 करोड़ रुपए की अधिक छूट जो तेलिया के लिए सरकार खाद्यान्न पदार्थ के लिए उनको दी जाती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने रेल संपार संख्या 249 को स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन इस विषय में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इसके निर्माण कार्य में काफ़ी विलम्ब हो रहा है, क्या इसके शीघ्र पूर्ण करवाए जाने हेतु कोई निर्देश पारित करेंगे? सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, इनके क्षेत्र में 3 लेवल क्रॉसिंग्स है माननीय अध्यक्ष जी। लेवल क्रॉसिंग नंबर 247, लेवल क्रॉसिंग नंबर 248 और लेवल क्रॉसिंग नंबर 249, जो कि संडीला स्टेशन के आसपास है, तीनों के तीनों। LC 247 में कंस्ट्रक्शन फिजिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे दोनों तरफ बहुत ज़्यादा बिल्ट अप एरिया है और क्रॉस रोड्स भी है अप्रोच एरिया में। LC 248 का टेक्निकल और फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन चुका है और इस काम को आगे बढ़ाया गया है। LC 249 में कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था माननीय अध्यक्ष जी, और रेलवे ने इस कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड कर दिया है मई के 2022 में। उसके बाद में काम में थोड़ी सी कुछ और चेंज आया, चेंज होने के कारण अप्रोच पोर्शन का कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड किया गया और इस पूरे के पूरे काम को टेंडर अवार्ड कर दिया गया है। काम तेजी से चल रहा है। There is a huge problem mainly in the rainy season, sir. There's a lot of water logging that is happening for almost 6 months a year, sir, and because of that farmers are not able to access their fields for 6 months a year, sir. And this has been raised by not just by me, sir, but most of the members in the house repeated times, sir. So I request the minister to give some clarity on this issue so that there's a technical there needs to be a new design that has to be come up with the RUBs, sir. So I request the minister to give what is the new design that are coming up so that this water logging problem can be taken off, sir. Thank you very much. माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे के अंडरपासेस में पानी की जो समस्या है उसके लिए बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं। उन स्टेप्स में 3-4 स्टेप है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो अंडरपासेस के डिज़ाइन में जो जॉइंट होते थे उन जॉइंट के ऊपर एक अलग से जैकेटिंग करके उसको जॉइंट को रोका गया है। दूसरा, जो रिटेनिंग वॉल होती थी उसमें वी पोल्स होते थे तो उस वी पोल्स को बंद किया गया है। तीसरा, बहुत सारी जगह जो अप्रोच रोड है उसके ऊपर एक कवर्ड शेड बनाया गया है। चौथा, जितनी भी अप्रोच वाला एरिया है उसमें कंक्रीट गार्ड वॉल बनाई गई है जिससे कि साइड का पानी नहीं आए। पांचवा, जो अप्रोच है रोड उसकी ग्रेडियंट को बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर किया गया है और इस तरह से किया गया है जिससे कि ग्रेडियंट पहले ऊपर जाए उसके बाद में नीचे रहे। Member Arvind Ganpat Sawant asked the Railway Minister a question related to incidents of railway accidents. Sawant had asked about the total number of incidences of railway accidents that have occurred during the last 9 years in the country. In his reply, the Railways Minister, Ashwini Vaishnav, has written that there is a steep decline in the number of consequential train accidents from 473 in 2000-2001 to 48 in 2022-23. The average number of consequential train accidents during the period 2004 to 14 was 171 per annum, while the average number of consequential train accidents during the period 2014 to 2023 declined to 71 per annum. Time for a very short break in the bulletin. News from the upper house on the other side.
Welcome back. Parliament on Wednesday passed a bill to accord the scheduled tribe status to the Hathi community in Sirmaur district of Himachal Pradesh. The Constitution Scheduled Tribes Order 3rd Amendment Bill 2022 was passed in the upper house of Parliament by voice vote. Lok Sabha had cleared the bill in December 2022. Replying to the debate on the bill, Tribal Affairs Minister Arjun Munda said that with the passing of the bill, the ST population in Himachal Pradesh will go up to 5.5 lakh from 3.5 lakh currently. हिमाचल प्रदेश की जो आबादी है उस आबादी के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जो संख्या थी वो संख्या लगभग 3.5 लाख के लगभग थी और ये जो समुदाय है जिन लोगों को आज शामिल किया जा रहा है उसको मिलाकर इसकी संख्या 5.5 लाख के लगभग हो जाएगी। कुल मिलाकर जो अनुसूचित जनजाति की संख्या होगी वो संख्या 8% से बढ़कर वो संख्या लगभग 20% के लगभग होगी दोनों को मिला करके। Initiating the discussion, Mamata Mohanta of BJD supported the bill, saying that the efforts should be made for the development of tribal communities by focusing on education and health. Members cutting across party lines took part in the discussion. केवल एसटी लिस्ट में ये समुदाय को शामिल करने के आदिवासी समुदाय को लाभ नहीं मिलेगा। ट्राइबल स्टेटस के साथ साथ आदिवासी समुदाय के लोगों के जीवन में उन्नति करना होगा, उनके उत्तम शिक्षा देनी होगी, उनका विकास करना होगा, उनका उत्तम जीवन यापन करने के लिए जितनी भी समस्या समाधान करना होगा। NDA government headed by Narendra Modi ji has taken lot of steps to support the tribal community and give lot of concessions and giving schemes to bring them up to the society. जनजाति समुदाय को आगे बढ़ाने का अवसर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। इसके पहले लोगों ने विचार नहीं किया और इसी प्रकार से जो हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से हाथी समुदाय को जनजाति सूची में शामिल करने के लिए उन दिनों से 49 वर्षों से लगातार वहां के लोगों ने आग्रह किया, संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उनके माध्यम से भी उन लोगों ने प्रयास किया। Early in the day, Rajya Sabha chairman said observation by an MP that one member has been suspended for raising an issue in the House is unprecedented and amounts to breach of privilege. He said such action should be met with exemplary consequences. The chairman also dismissed the charge of mic switched off when LOP Mallikarjun Kharge was speaking. Let me tell you, two things were widely reported in media. One was mic of leader of opposition was put off. And the second was that emanated from another member of parliament, extensively quoted, that a member was suspended for raising an issue. With full sense of responsibility and deep anguish, the suspension of the member was not because the member raised an issue. The suspension was because, take your seat, because the member committed misconduct, indecorous behavior. No one is suspended in this house for raising an issue. We cannot allow this kind of things. It is plain and simple breach of privilege. Putting it in public domain that this house suspended a member because the member was trying to raise an issue. This is unpardonable. This is an aggravated form of breach of privilege. This is giving impression to the people at large. Such an action has to be visited with exemplary consequences.
and I have checked with the deputy chairperson. Floor was given to the leader of the opposition. Leader of the opposition was at a time when there was discussion on a legislative business. Any transgression that takes place away from the main theme, everyone in the house is aware that can't be allowed. And that is, at that stage, the Honorable Deputy Chairperson intervened. So it is not that mics were put off. It means the indulgence accorded by the chair to a particular member to focus on the issue which is subject matter of discussion. And if the honorable member transgresses it, goes into another domain, that surely can't be allowed. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar reiterated on Wednesday that question hour is the heart of parliamentary procedures. Question hour is important. It is heart of parliamentary debate. It gives an opportunity to members to ask questions to the government, enforce accountability, transparency, and the government also benefits by wisdom and inputs of the honorable members. On women and child, there was such comprehensive response. I expected lady members and others to particularly ask searching questions. It is not a pleasant duty, honorable members. We must avail the upper house time. Every second has to fructify into public gain, into national gain. Chairman Dhankar conducted the question hour amid din. Questions were raised over initiatives under Unnat Bharat Abhiyan and inclusion of castes from Andhra Pradesh in central list of OBCs, among others. जिस प्रकार ग्रामीण इलाकों की समस्याएं सुलझाने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया है, क्या सरकार उसी तरह शहरी इलाकों की मूलभूत समस्याओं की निवारण के लिए उन्नत भारत योजना के देश के शहरी इलाकों में भी लागू करेगी? उन्नत भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की ओर जाने के लिए भारत की नई पीढ़ी को विशेष करके उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मन में समाज के प्रति समर्पण भाव बनाना, लोक समस्या के बारे में अवगत कराना, संवेदनशीलता खड़ा करने की एक अनोखा प्रयास है। आज उस कार्यक्रम के माध्यम से देश की 3,480 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उससे जुड़े हुए हैं। IIT दिल्ली उसकी सेंट्रल कोऑर्डिनेटर है। ये प्रारंभिक अवस्था में गांव की साथ जुड़ाव रखता है, लेकिन इसकी व्यापक दायरे में भारत की लोक समस्या, भारत की जन आकांक्षा और भारत को विकसित करने की जो एम है, उसी में हम काम करते हैं। Whether the government has data regarding the number of beneficiaries, especially tribal and women beneficiaries, in the last 3 years throughout the country, including Odisha. If you look at the annexure with regards to the number of beneficiaries state-wise, it is given. However, community-wise breakup is not maintained by the bank. Whether state government of Andhra Pradesh has sent a recommendation for including Turpu Kapus, Kalinga Vaishyas, Sister Karnams and Sondi castes in the central list of OBCs. Honorable yes Minister, or no? Honorable Minister, महोदय, आपके माध्यम से माननीय संसद को मैं अवगत कराना चाहती हूँ, आंध्र प्रदेश सरकार से ऐसे जातियों को ओबीसी में शामिल करने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया। राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो हम लोग विचार करेंगे। राज्य सरकार बाहुबली बाढ़ लगाने की जो योजना बना रही है, उसमें कितनी जगहों पर बाढ़ लगाई जा रही है और उत्तर प्रदेश में किन किन राजमार्गों पर और बाढ़ लगी है, इसके बारे में सब टेस्टिंग किया गया। ये इको फ्रेंडली है और स्टील के बजाय बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाने के बारे में सब अप्रूवल मिल गए हैं। कल छत्तीसगढ़ में एक पायलट प्रोजेक्ट करने का हमने निश्चित किया है और ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने के बाद स्टील के बजाय बाम्बू का क्रैश बैरियर होगा और वो इको फ्रेंडली होगा, जिसके कारण वनवासी क्षेत्र में आदिवासियों को काम मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट में लगभग बाम्बू काफ़ी उपलब्ध है,
वहाँ भी ये क्रैश बैरियर बनेगा। और जो एक्सिस कंट्रोल रोड बनाते हैं जिसमें जानवर और लोगों ने रोड में आना नहीं चाहिए, उसका भी उपयोग हमने करने वाले हैं और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है। Whether the government is intending to increasing the capacity of Anganwadis in the country by converting them as early childhood care and education centers. If yes, whether the pilot project be held in the state with high utilization rate of Poshan Abhiyan fund like Kerala. Poshan Abhiyan technologically now reaches out to more than 10 crore beneficiaries across the children, across the nation. 94% of them are Aadhaar verified, thereby making it the largest nutrition program in the world that is being successfully run. I must also here say, currently 13 lakh Anganwadis are under the ambit of Poshan Abhiyan. We have held meetings with states, including the state of Kerala, where we have assured that mini Anganwadis will now be converted into full-fledged Anganwadis if the state so desires. So, as is known to a legend like P.T. Usha, the Prime Minister envisioned the new education policy after a hiatus of 3 decades, under which additional care has been given to early childhood education, namely even Balvatikas, as is a partnership with the Ministry of Education to ensure across private and public sector. During the question hour in Rajya Sabha today, written replies were given by the concerned ministries to several questions. TMC MP Dr. Santanu Sen asked about the number of farmers who have directly benefited from the reforms introduced in the cooperative sector as per the Cooperative Societies Act 2021, details thereof. In his reply, Minister of Cooperation Amit Shah said cooperative societies play a key role in the overall economic development of the country with its member-driven approach in order to strengthening cooperative movement in the country, deepening its reach to the grassroots, improving access to credit facilities and training opportunities to the farmers. The Ministry of Cooperation has taken various initiatives. The Upper House paid tributes to the martyrs of Kargil War heroes on the occasion of Kargil Vijay Divas, remembering the sacrifice made by soldiers of the Indian Army. On this day, the country commemorates the Army's triumph over Pakistan troops in Kargil, Ladakh in 1999 after more than 60 days of battle. Today is the 24th anniversary of Kargil Vijay Divas. On this day, in 1999, our brave soldiers, with their indomitable courage and determination, drove away the infiltrators from our territory in Kargil. Let us bow our heads in gratitude for those who were martyred in the Kargil war. Also salutations to our forces and personnel who are ever prepared to make supreme sacrifice for our nation. Displaying exemplary courage, our valiant soldiers overcame treacherous terrain and extremely hostile weather conditions and trounced the enemy. The saga of their bravery continues to inspire and motivate us every single day to be in service of the nation. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect in the memory of our brave soldiers. With this, we come to the end of House Highlights. For daily updates, keep watching Sansad Television. Good night.